नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। किसानों के फायदे के लिए रबी और खरीफ फसलों का कैलेंडर तैयार करने की हिदायत। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने महकमा ज़राअत व बागबानी हुक्काम को अहकामात किए जारी। गुंटूर में वाईसीपी लीडर नूरी फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़लियतों की इमलाक पर कब्जे का हुकूमत पर इल्जाम। एमएलए नज़ीर अहमद की खामोशी पर भी की तनकीद। अमरावती में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की होगी नकाब कुशाई। आंध्र प्रदेश के बीजेपी सदर पीवीएन माधव का ऐलान। क्रिसमस मोहब्बत और हमदर्दी की याद दहानी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर का तासुर। विजयवाड़ा में सीबी क्रिसमस तकारीब में की शिरकत। विजयवाड़ा में हिंदू जेएसी का एहतजाज। बांग्लादेश में दीपुदास के कत्ल की मजम्मत। बांग्लादेश में हिंदू बरादरी की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। आइंदा 3 दिनों तक बरकरार रहेगी सर्द लहर। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने सूरन आंध्रा अहदाफ और 10 उसूलों के निफाज पर आला सतही इजलास मुनक़िद किया। अमरावती सेक्रेटरीट में मुनक़िदा इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी के विजयानंद, महकमा आब रसानी और रेवेन्यू के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साई प्रसाद के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के आला हुक्काम शरीक हुए। वजीर आला ने कहा कि स्पीड ऑफ डिलीवरिंग गवर्नेंस के तहत अवाम को तेज़ और बेहतर खिदमात फराहम की जाएँ। उन्होंने हिदायत दी कि सरकारी महकमों के दरमियान बेहतर हम आहंगी कायम करते हुए कम खर्च में तवन्नाई, बिजली, ट्रांसपोर्ट और पानी की सलामती यकीनी बनाई जाए। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के मफाद में ज़री हुक्काम को अहम हिदायत दी। अमरावती सेक्रेटरीट में मुनक़िदा जायज़ा इजलास के दौरान वजीर आला ने कहा कि रबी और खरीफ फसलों के लिए एक जामे कैलेंडर तैयार किया जाए ताकि काश्त और मार्केटिंग मुनज़्ज़म अंदाज में हो सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि फसलों की खरीदारी और फ़रोख्त उसी कैलेंडर के मुताबिक होनी चाहिए। इस इजलास में रियासती वज़ीर ज़राअत अच्छन नायडू और नादेंडला मनोहर वर्चुअल तौर से शरीक हुए। इजलास में अनाज की खरीदारी और मुख्तलिफ ज़राई पैदावार की मार्केटिंग पर तफसीली गौर किया गया। आंध्र प्रदेश में अपोजिशन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की तबीयत नासाज है। पार्टी की जानिब से जारी ट्वीट में बताया गया कि जगन मोहन रेड्डी बुखार में मुब्तला हैं और डॉक्टरों के मशवरे पर उन्होंने आज का पुलिवेंदोला दौरा मनसूख कर दिया। इनकी अलामत की खबर सुनकर पार्टी कारकुन और हामी तशवीश में मुब्तला हैं। वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने इनकी जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। गुंटूर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की कोऑर्डिनेटर नूरी फातिमा ने मुसलमानों की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। मुसलमानों की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर उन्होंने हुकूमत और मुकामी एमएलए को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। नूरी फातिमा ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की मखलूत हुकूमत अक़लियतों की ज़मीनों को हथियाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि काकानी में तकरीबन 71 एकड़ वक्फ ज़मीन को इंडस्ट्रियल पार्क के नाम पर कब्जे में लेने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि गुंटूर मशरक़ी हल्के के एमएलए नज़ीर अहमद के पास अक़लियतों से मुतालिक कई ओहदे हैं, लेकिन अक़लियती जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। మైనారిటీలందరికీ
అది ఒక ప్రాపర్టీ ఉన్న చిన్న కొన్ని ఉన్న ప్రాపర్టీస్ దానివల్ల ఎంతో మంది పేదవాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు. మీరు చెప్పిన మాటలు మేము ఉచితంగా నేను స్కూళ్ళు కడతాను, నేను హాస్పిటల్ కడతాను, నేను మంచి సంక్షేమం కోసం కడతానని చెప్పిన మాటలన్నీ పోయి ఈరోజు మా ప్రాపర్టీస్ మీద పడుతున్నారే. నేను ఒక్కటి అడుగుతాను, ఇవి ప్రతి ఒక్క సామాజిక వర్గానికి కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా మా క్రిస్టియన్స్ కానీ లేకపోతే హిందువులకు కానీ అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, అందరి ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు ఎందుకు మరీ ముఖ్యంగా మైనార్టీల మీద పడుతున్నారు? అది ఈ ప్రశ్న నిజంగానే ఒక్కసారి నేను ఈ మీడియా ప్రకారంగా మైనార్టీలందరూ నేను అడుగుతున్నాను. నేను ఎవరిని తీసుకోమని నేను చెప్పట్లేదు, కానీ మనం ఎందుకు ఈరోజు మరి అక్కడ అమరావతిలో వాళ్ళు చెప్పిన ల్యాండ్ ఎక్వైజ్ చేశారు, ఎంతో మంది ల్యాండ్ పూలింగ్ చేశారు, దాన్ని డెవలప్ చేయలేకపోయారు. అక్కడ ఇంకా రైతులు మేము ఇవ్వము, మీరు ఏం డెవలప్ చేస్తున్నారు అన్నారు. దానికోసం మరి ఎటు తీసుకోవాలో ఏం తీసుకోవాలో తెలియక ఈరోజు మరి మైనార్టీ అంజుమన్ ప్రాపర్టీస్ని మీరు తీసుకోవడం అనేది నిజంగానే చాలా బాధగా ఉంది. అలాగే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం, దీన్ని మేము హైకోర్టుకి తీసుకెళ్తాము, ఖచ్చితంగా హైకోర్టులో మేము వేస్తాము. దీన్ని మీరు ఆపకపోయారా మీరు ఉధృత చేయడానికి వెనకాడమని చెప్పి మీకు హెచ్చరిస్తున్నాము. అలాగే ఇక్కడున్న స్థానిక దద్దమ్మ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు ఎవరైనా నోరెత్తి మాట్లాడారా ఏమని మా ఎమ్మెల్యే గారు మంచి చేశారని, నిజంగానే మీరు కూడా ఒక మచ్చలా మిగిలిపోతారని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను. కుదిరితే వచ్చి సపోర్ట్ చేయండి, పార్టీలకు అతీతంగా వచ్చి సపోర్ట్ చేయండి. మనం అందరం కలిసికట్టుగా ఆ వక్ఫ్ బోర్డ్ అలాగే అంజుమన్ ల్యాండ్ ని కాపాడుకున్నారు తప్ప మీరు ఎవరైనా కావాలంటే ఎమ్మెల్యే గారండి మీరు ఇంకా బెటర్ టు లీవ్ దిస్ పాలిటిక్స్. ఎందుకనంటే పనికి రాదు మీకు పాలిటిక్స్, ఏంటంటే జేబులు నింపుకోవడానికి తప్ప అని చెప్పి ఒక మీనింగ్ గా మారుతున్నారు. బెటర్ లీవ్. नंदियाल जिला के श्री सैलम प्रोजेक्ट कॉलोनी में इंडोमेंट मुलाजमीन के लिए नए मकानात तामीर कर दिए गए हैं। इंडोमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर के रामचंद्र मोहन ने मुलाजमीन के मकानात का मुआयना किया। कमिश्नर ने इस मौके पर इंजीनियरिंग हुक्काम को हिदायत दी कि मकानात के अहाते में फौरी तौर पर अंदरूनी सड़कों की तामीर की जाए और गाड़ियों के लिए मुनासिब पार्किंग का इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मकानात के अतराफ स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएं और माहौल सरसब्ज बनाने पेड़ पौधे लगाए जाएं। कमिश्नर ने रिहायशी कॉलोनी में एक छोटे मंदिर की तामीर के लिए भी तजावीज़ तैयार करने की हिदायत दी। इतलात के मुताबिक श्री सैलम देवस्थानम बोर्ड की जानिब से 3 मॉडल्स में मजमूई तौर पर 297 मकानात तामीर किए गए हैं। नंदियाल जिले से खबर है, यहाँ महकमा सेहत के दफ्तर में अचानक पेश आए हादसे से एक मुलाजिम जख्मी हो गया। इतलात के मुताबिक दफ्तर की छत का हिस्सा गिरने से एपिडेमिक सेक्शन इंचार्ज लक्ष्मी नारायण के सर पर शदीद चोटें आईं। साथ ही मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर उन्हें नंदियाल सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि इनके सर पर 4 से 6 टाँके लगे हैं। मुलाजिमीन का कहना है कि नए अजला का क़याम तो कर दिया गया है, लेकिन पुरानी इमारतों में मुनासिब हिफाजती इंतजामात ना होने से जानों को खतरा लाहिक है। इस वाक़े के बाद हुक्काम ने फौरी तौर पर छत की मरम्मत और प्लास्टरिंग का काम शुरू कर दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका के मवासलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। आज सुबह 8:55 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये खिलाई मिशन रवाना किया गया, जिसमें हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर लॉन्च व्हीकल LV-M3 का इस्तेमाल किया गया। ये LV-M3 की 6ठी ऑपरेशनल परवाज थी। Six, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. LVM-3M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM-3M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है LVM-3M6 रॉकेट। दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं।
इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि लॉन्च व्हीकल ने कामयाबी के साथ और दुरुस्त तरीके से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मवासलाती सैटेलाइट को मतलूबा मदार में दाखिल कर दिया है। This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. This was not an easy task considering the enormous efforts required, because it requires very close coordination among various teams at different ISRO centers, units, industry, launch complex, and the entire infrastructure availability. I take this opportunity to congratulate each and every team members for achieving this great feat for our country. Today's mission has brought yet another important glory to the India. This is the heaviest satellite ever lifted from Indian soil using a Indian launcher. This is also the third fully commercial mission of LVM-3, and the vehicle has demonstrated its excellent track record, including the Chandrayaan-2, Chandrayaan-3, OneWeb missions and CMS-3 satellites. This has injected in the orbit. Dear friends, I am extremely happy to announce the performance. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जानिब से सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किए जाने पर वजीर आज़म मोदी ने इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। श्रीहरिकोटा से कामयाबी से स्पेस मिशन की लॉन्चिंग पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। वजीर आला ने कहा कि यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लेकर जाना और इसे अपने मतलूबा मदार में बिल्कुल दुरुस्त तरीके से पहुंचाना बड़ा कारनामा है और हिंदुस्तान की सरजमीन से अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च करना काबिल फ़ख्र संगमेल है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने साउथ इंडिया रॉकेटरी चैलेंज 2026 का पोस्टर जारी किया। ये मुकाबला पहली मरतबा आंध्र प्रदेश साइंस सिटी अमरावती के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िद हो रहा है। इसका मकसद स्कूल और कॉलेज तलबा में रॉकेट साजी की सलाहियतों को उजागर करना और साइंसी सोच, जिद्दत और अमली तरबियत को फ़रोग़ देना है। फाइनल मुकाबले 22 से 24 जनवरी को गुंटूर की विजयनंद यूनिवर्सिटी में होंगे। मुंतज़मीन के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म तलबा को एरोस्पेस के शोबे में अपनी तख्लीकी और तकनीकी सलाहियतें पेश करने का मौका फराहम करेगा। दिलचस्पी रखने वाले तलबा आंध्र प्रदेश साइंस सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश बीजेपी के सदर PVN माधव ने ऐलान किया है कि साबिक वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का कांसे का मुजस्सिमा अमरावती में नस्ब किया जा रहा है। विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश बीजेपी के सदर ने बताया कि 25 दिसंबर को अमरावती के वेंकटापालेम में वाक़ अटल जी स्मृति वन में वाजपेयी के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की जाएगी। We have organized Atal Modi Suparipalana Yatra, Good Governance Yatra, around the state of Andhra Pradesh. This year happens to be the centenary of Atal Bihari Vajpayee. Atal Bihari Vajpayee is so tall leader, nobody matches to his caliber. A person in public life for more than 70 years and a parliamentarian for more than 60 years, having a huge and long and very successful career
and it's not a bed of roses for him. He had lots of struggles, lots of things. After fighting all those things, he has become the Prime Minister, the pivotal role that everybody aspires for. He became Prime Minister for thrice. Thrice he became the Prime Minister of the nation. So this tall personality's centenary should not be celebrated in an ordinary fashion. So we thought of organizing a big yatra around the state. So we started from Dharmavaram and we are coming back to Amaravati. So all the district headquarters, we have installed bronze statues of Atal Bihari Vajpayee ji. And not just installing his statues, we have organized an exhibition of what all the achievements he has done, so that public can know about what all programs, the welfare programs he has contemplated, the kind of struggles I was telling you. So what all those struggles he has faced and what is his life. So that's another highlight of the program. And he stood for Atmanirbhar Bharat, Swayam Samruddhi Bharat. He want India to be self-reliant in all aspects. So to showcase it also, we have organized Swadeshi stalls and people telling people to use Swadeshi products. Our Honorable Prime Minister has named his birth anniversary as Good Governance Day and directed every state government to organize good programs highlighting the achievements of Atal Bihari Vajpayee in all educational institutions as well as in all the offices. So tomorrow happens to be the birth centenary of Atal Bihari Vajpayee. He's entering 101 birth anniversary, and we state government was kind enough to commemorate Good Governance Day, culminating our yatra also at the same place. And we are very thankful to our Honorable CM, Sri Nara Chandrababu Naidu garu, for giving us one of the very beautiful locations in Amaravati. Atal Bihari Vajpayee's statue happens to be the first statue in Amaravati. That's also a great news. करनूल जिला में तेलुगु देशम पार्टी की नई जिला सदर जी कृष्णम्मा ने अपना ओहदा संभाल लिया है। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनान कसीर तादाद में शरीक रहे। इस तकरीब में रुकने पार्लिमान बस्ती पार्टी नागाराजू ने शिरकत की और नई सदर जी कृष्णम्मा को शॉल उड़ाकर मुबारकबाद पेश की। మరోసారి నిరూపితమైనటువంటి రోజు ఈరోజు మన తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులైనటువంటి మరియు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరియు యువ నాయకులైనటువంటి నారా లోకేష్ గారు ఈ కర్నూలు జిల్లా బీసీలకు మొట్టమొదటిసారిగా మహిళా అధ్యక్షులను చేసినందుకు వారికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఒక మహిళను జిల్లా అధ్యక్షులు చేశారంటే మా బీసీల యొక్క పక్షపాతం ఎంత అని మరియు మహిళా పక్షపాతం కూడా మరోసారి రుజువైంది ఈరోజు. కావున అక్కగారి ఆధ్వర్యంలో రేపు రాబోయే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ లో ఘనంగా విజయం సాధిస్తామని చెప్పేసి మరోసారి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంతేగాక తెలుగుదేశం పార్టీ అంటేనే బీసీల పార్టీ అనేది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఎస్పెషల్లీ మన కర్నూలు జిల్లాలో బీసీలు అత్యధిక జనాభా కలిగి ఉన్నారు. వీళ్ళని గుర్తించాలని చెప్పేసి ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి ప్రత్యేకించినటువంటి ఒక ఎంపీగా ఒక బీసీకి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు జిల్లా అధ్యక్షురాలు కూడా మహిళలు చేశారంటే చాలా గర్వంగా ఉంది. ఒక పూర్వ సామాజిక వర్గం నుంచి ఒక ఎంపీగా మాకు ఇచ్చారు. ఒక వాల్మీకి సామాజిక వర్గం నుంచి మా అక్కగారైన గుడిసెక్షణ గారిని ఇచ్చారంటే చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు ఈరోజు. అలాగే మా సోదరులు నాగరాజు యాదవ్ గారికి అందరికీ మీకు అందరికీ టౌన్ లో తెలిసినటువంటి వ్యక్తి, సుపరిచితమైనటువంటి వ్యక్తి అయినా టౌన్ ప్రెసిడెంట్ గా కూడా చేశారు. ఆయనకి ఇక్కడ ప్రధాన కార్యదర్శిగా చేసేందుకు మరోసారి ఆయనకు కూడా నేను ధన్యవాదాలు. विजयवाड़ा के लोक भवन में सेमी क्रिसमस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नजीर ने क्रिसमस के पैगाम पर रोशनी डाली। गवर्नर ने कहा कि क्रिसमस वो मौका है जब यसु मसीह की तालीमात, मोहब्बत और हमदर्दी को खुशी के साथ याद किया जाता है। विजयवाड़ा में सेमी क्रिसमस तकारीब में गवर्नर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर क्रिश्चियन बरादरी के लोग और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। I extend my warm greetings to you all on the eve of Christmas festival and welcome you to the Christmas festival celebrations organized by Andhra Pradesh Lok Bhavan here today. Christmas marks the birth of Jesus Christ and the day is celebrated all over the world with tremendous joy and devotion. The birth of Jesus Christ is an event of utmost importance to the followers of Christianity, as it is believed that God sent His only Son
on earth as a sacrifice to redeem the people of the world from their sins. The birth of Jesus Christ symbolizes the significance of life. He came to give us love, hope and joy. It is believed that विजयवाड़ा में हिंदू जॉइंट एक्शन कमेटी ने बांग्लादेश में पेश आए वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। BRTS रोड पर आदि शंकराचार्य सर्कल में मुनक़िदा मुजाहरे में मुजाहिरीन ने बांग्लादेश में हिंदू नौजवान देवपुदास के कत्ल की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मजहबी इंतहा पसंदों के हाथों हिंदू बरादरी मुसलसल निशाना बन रही है और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात ज़रूरी है। इन एहतजाजियों का कहना था कि मुल्क की तक़सीम के वक्त इन इलाक़ों में बड़ी हिंदू आबादी थी, लेकिन वक्त के साथ इनकी तादाद में शदीद कमी आई है, जिसकी वजह से आसान शिकार बन रहे हैं। Today we are protesting against Bangladesh issue. See, here, where is the humanity? I am asking straightforwardly to this religion. Yesterday or before yesterday, lively you have burned a human. Where is the humanity? You are saying is a peace religion. A peace religion is doing like that. One more thing is, in India, in the double standards, in the political people are doing. It's very harmful to the politicians as well as our Hindu people and our India. See, if someone or Nitish has removed mask and entire India has burnt and they have given the issue that. But yesterday Bangladesh alive burnt, but no one can protesting, and this is the humanity. A human has burnt, but you people are not giving a respect to the human. Is it correct? So I am requesting to every politician, if you see in 1947, India has given the freedom to Pakistan. That time, our Hinduism is 28% along that, but today is below 10%. If you again 1972, महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। हैदराबाद में महकमा मौसमियात की साइंसदान डॉक्टर ए श्रावणी ने बताया कि शुमाली हिंद में सर्द लहर जारी है और ये अब तेलंगाना में भी दाखिल हो रही है। आइंदा 2 से 3 दिनों तक ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। पूरे तेलंगाना में रात के वक्त दर्जे हरारत मामूल से 3 या 4 डिग्री कम रहने का इम्कान है। Or Telangana, as it is, cold wave conditions are prevailing entire the northern part of India. At the same time, it will be entering into our Telangana state also. This to be continued in the next 2 to 3 days. Entire Telangana may experience in the lowest temperatures, and the departure from normal is expecting 3 to 4 degrees below normal in the minimum temperatures, especially in the night times. In the next 5 days, dry weather prevails in the entire states. Apart from that, minimum temperatures will be there into the 7 to 18 degrees in the entire state. Especially in the northern parts might be affect into the these low temperature conditions, especially in the Adilabad, Asifabad, Nirmal, Mancheriala. These districts are expecting the 7 to 8 degrees, and the part of Medak, Sangareddy, and these areas are might expecting 8 to 10 degrees minimum temperatures. And apart from the Hyderabad and the eastern part of Telangana is expecting from the 12 to 18 degrees of average. हैदराबाद शहर में बच्चों की खरीद और फरोख्त का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। सैबराबाद पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने कार्रवाई करते हुए 12 अफराद को गिरफ्तार किया, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से शीरकवार बच्चों को लाकर हैदराबाद में फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमान अहमदाबाद से भी बच्चे ला रहे थे। पुलिस के मुताबिक अब तक 15 बच्चों की खरीद और फरोख्त की जा चुकी है, जबकि 2 शीरकवार बच्चों को महफूज तरीके से रेस्क्यू किया गया। तहकीकात में ये भी सामने आया है कि इस रैकेट्स के एजेंट्स का ताल्लुक 8 अस्पतालों से है और हर बच्चे की खरीद और फरोख्त तकरीबन 15 लाख रुपए में की जा रही थी। मजीद तफसीलात पुलिस की जानिब से जल्द फराहम की जाएंगी। दक्षिण भारत न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत। आदाब।